हाँ कर दो ऑडियो। हाँ ठीक है, लिंक शेयर कर दो, ऑडियो देख लेना एक बार। Yeah, this is fine. दिवाकर भाई लाइव पे लिंक शेयर कर रहे हैं। हाँ मैं कर दूँ। मैं दे रहा हूँ लाइव पे देख रहा हूँ। ये रहेगा इसको देखिए। वो भी ये वाला भी दे देते हैं जो यूट्यूब का है। ये थोड़ा सा लैग आता है ना। हाँ 20 सेकंड का है। लिंक हो जाएगा, वो चेक करें। Our Shakti is come. ठीक है। ऑडियो आ रहा है ना? ये दोनों चीज़ अपने पास मतलब नहीं यहाँ बैठना उस टाइम लिंक खाली वो मैडम ऑलरेडी चला हुआ था मेल, तो उसमें क्या फ्राइडे को उसका 3-4 3 PM। Am I audible? Dr. Das, we will start your presentation at scheduled time at 3:05. Sure. Thank you.
सार्थक भाई स्क्रीन शेयर किया हुआ दिख रहा है? हाँ जी, इसमें भी फोल्डर दिख रहा है। दिख रहा है मुझे। बैक है ना? 10 सेकंड का बैक। दिख रहा है मुझे। अरे ये दिखेगा ना? दिख रहा है। और 10-15 सेकंड आ गया दिख रहा है। अरे
Shall we start? न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत न्याय विभाग द्वारा सितंबर 2021 में की गई थी और आज यह 20वीं वेबिनार है जिसका विषय है बाल यौन शोषण के विरुद्ध हितधारकों का संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। आज इस वेबिनार में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मणिपुर सक्रिय रूप से शामिल है। जेनिम्स ने डीओजे के सहयोग से मणिपुर में 2 साल तक स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया है। सबसे पहले मैं श्री चंद्रा मोहियार जी, डायरेक्टर A2J न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को उनके स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। रेस्पेक्टेड चेयर, जॉइंट सेक्रेटरी सर, आज यहाँ पे उपस्थित सभी स्पीकर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के टीम मेंबर्स एंड खासकर जो ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हैं, फील्ड फंक्शनरीज CSC के ग्राउंड लेवल में, सभी का मैं इस 20th वेबिनार में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो इम्पॉर्टेंट भी है और सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है। आप सब जानते हैं कि मोर देन 40% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो चिल्ड्रन कैटेगरी में आता है। अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो ये नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन माना जाएगा। तो इतना बड़ा सेक्शन को जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि कई बार ये चिल्ड्रन विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे विल बी गोइंग थ्रू। तो ये काफ़ी सेंसिटिव और न्यूआंस्ड सब्जेक्ट है और ये सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही कंसर्न नहीं है। चिल्ड्रन से जुड़े हुए पेरेंट्स, टीचर्स, सारे पुलिस एंड अदर सेक्शंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद दिस सब्जेक्ट। तो हम आज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज का जो वेबिनार है उसमें थियरेटिकल टाइप ऑफ लर्निंग ना हो। जो हमारे साथ से जुड़े हैं, जेनिम्स मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, उन्होंने हमारे साथ 2 साल का प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड लेवल में उन्होंने काम करके उनके एक्सपीरियंसेस, कई स्टेक होल्डर्स इनके साथ से जुड़े हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस से आज हमको समझाएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आज एक असेसमेंट का भी एक प्रैक्टिकल मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो प्री लर्निंग के एक असेसमेंट होगा, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस होगा। तो ये सारे डिफरेंट वे ऑफ डिलीवरिंग दी सब्जेक्ट इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। तो आई विल नॉट टॉक मच बिकॉज हम एक्सपर्ट से आज सुनेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं जेनिम्स टीम से अनुरोध करता हूं कि जो प्री टेस्ट फॉर्म है उसे सारे लोगों के पास में है, उसे भर के उसे 10 मिनट में भर के उसको वापस जमा कर देना है। प्री टेस्ट फॉर्म हम लोगों ने सर्कुलेट किया टेबल पे, सभी लोग कर सकते हैं इसको। एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ये, पर ये हम जो बात जिस विषय पे करने वाले हैं उससे संबंधित है। और ये इस फॉर्म को भर के सबमिट कर देंगे। मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विषय है, इससे जुड़े हुआ जो कानून है, बाल यौन शोषण की समस्या से निपटने के लिए देश ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में लागू किया। कि इस कानून के प्रावधान क्या हैं, इसकी मुख्य बिंदु क्या हैं, मैं खुशी जी को आमंत्रित करता हूं उनके प्रेजेंटेशन के लिए।
खुशी जी इनफोल्ड ट्रस्ट बेंगलुरु के लिए काम करती हैं। पिछले 24 महीने से केएनएम द्वारा मणिपुर राज्य में चलाए जा रहे स्टेक होल्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का डिजाइन एनफोर्ड ने तैयार किया है और समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सक्रिय सहयोग भी दिया है। खुशी जी। तो मैं शुरू करूंगी, इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिलके मैं बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले जो पॉक्सो आने से पहले, पॉक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट जारी होने से पहले बाल यौन शोषण के जो केसेस होते थे वो बहुत कम रिपोर्टिंग होते थे। पॉक्सो के आने के बाद जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है उसका रिपोर्टिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 2021 का जो डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा में देखेंगे तो अक्रॉस इंडिया वी हैड 53,900 केसेस रिपोर्टेड अंडर पॉक्सो एक्ट। एंड इसमें विक्टिम्स जो हैं, विक्टिम्स का परसेंटेज जो है 97, यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। विक्टिम्स परसेंटेज जो है गर्ल्स 97% एंड बॉयज 2%। इसके बारे में जस्ट 1 मिनट के लिए मैं बात करना चाहती हूँ। जो रिपोर्टिंग है इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काइंड ऑफ वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस दैट बॉयज फेस। लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा यौन शोषण होता है एंड दूसरे रिसोर्स पर्सन इसके बारे में शायद बात करेंगे, पर जो रिपोर्टिंग है बहुत कम रिपोर्टिंग होता है जो लड़कियों के अलावा जो होता है। तो in 2021 the data was 97% victim girls and 2% victim boys. Another data which also other resource persons will touch upon is that जो offenders होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो ज़्यादातर जान पहचान लोग ही होते हैं एंड इसके बारे में भी नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। एंड डेटा में जो आया है क्राइम रिकॉर्ड्स डेटा में 61% ऑफ द ऑफेंडर्स of penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault are people known to the victim in 2021. Alright. तो पॉक्सो आने से पहले इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे कानून थे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस को कवर करते थे, इंक्लूडिंग द इंडियन पीनल कोड, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, SC/ST एक्ट, IT एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, JJ एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। तो बहुत सारे लेजिस्लेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। सो व्हाई डिड वी नीड अ स्पेशल लेजिस्लेशन टू कवर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन? तो ऐसा स्पेशल कानून की ज़रूरत क्या थी? सो द की नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। की फीचर्स ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है, सबसे पहले ये है कि जेंडर न्यूट्रल। इस पॉक्सो के आने से पहले ऑल द लॉज वर मोर गियर्ड टुवर्ड्स गर्ल्स एंड वुमेन। तो अगर लड़कों के साथ मतलब अंडर 18 एज का लड़कों के साथ अगर कुछ यौन शोषण होता, उसमें अदर देन सेक्शन 377 अंडर द IPC देयर वर no other legal provisions providing protection for children. So POCSO first of all was gender neutral and POCSO में child friendly provisions लाया गया है for reporting, recording of evidence, investigation and trial. We'll go into that in detail in just a bit. Under POCSO, the offender is presumed guilty. POCSO is such an act which is not like other acts. Very few acts consider the offender as guilty, and the innocence of the offender is, the burden of proof is on the offender to prove themselves to be innocent. And इसके साथ साथ special courts have been designated for speedy trial. Punishment is graded as per the gravity of the offence, and अगर अपराधी जो हैं बच्चे होते हैं उनके लिए whatever provisions of the Juvenile Justice Act that would be considered for child offenders under POCSO Act. Another thing that POCSO did was define sexual offences. POCSO आने से पहले बहुत limited understanding of sexual offences against children थे। POCSO में 7 सेक्सुअल ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके साथ साथ मैंडेटरी रिपोर्टिंग भी पॉक्सो में आया है। सेक्शन 19 ऑफ पॉक्सो मेक्स इट मैंडेटरी ऑन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी पर्सन हु हैज नॉलेज और एप्रहेंशन
that a child has faced sexual violence to be reported, and not reported to the doctor, not reported to Childline. If I have any information, if anybody in the room or watching this webinar has any information on a child facing sexual abuse, they are required to report it to the local jurisdictional police station or to the Special Juvenile Police Unit. This is the requirement under Section 19 of the POCSO Act. And अगर हमसे ये reporting नहीं होता है, then under Section 21 there is a punishment of 6 months of jail term for the person who doesn't report. POCSO also has a provision for false reporting. अगर मैं किसी के खिलाफ गलत फहमी false case मैं register करती हूँ, then मेरे खिलाफ case register करने का false reporting का भी POCSO में है. Emergency medical services, POCSO made it mandatory, and subsequent to the 2012 case in Delhi, the Criminal Law Amendment Act made it mandatory that all hospitals, government and private, have to provide emergency medical care, treatment, sample collection and investigation for any victim of sexual violence, khas karke the POCSO Act. POCSO also has provisions for care and protection. The Child Welfare Committee is vested with the responsibility of care and protection of the victim child. POCSO में बहुत सारे child friendly procedures लाए गए हैं, इसके बारे में just अभी 5 मिनट में बात करते हैं. Special courts have been designated. POCSO also has compensation, victim compensation and financial relief have been provided for under POCSO Act. Child is anyone below the age of 18 would be considered as a child. Going forward, the offences under POCSO have been categorized under touch-based offences, non-touch-based offences and other offences. Touch-based offences का मतलब किसी बच्चे का शरीर को छू के अगर कुछ offence होता है, उसको touch-based offences में लाया है, and उसमें penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault. So under penetrative sexual assault, the provisions are for any form of penetration. It is not limited to peno-vaginal penetration, जो पुराने like IPC and दूसरे laws में होते थे. Any form of penetration by any object like a finger or a pen, a pencil, by any person. So it's not limited only to a male person causing a penetrative sexual assault. Any person committing a penetrative sexual assault, which can be oral, anal or vaginal. Any one of these categories would be considered as a penetrative sexual assault. This is section 3, usme punishment section 4 hai. There is another category called aggravated penetrative sexual assault under POCSO Act, which is for depending on the person who has committed the sexual offense. So category of the offender के ऊपर dependent है, बच्चे का उम्र, जितने बार बच्चे के साथ हुआ है, बच्चे के साथ ये penetrative sexual assault के बाद अगर बच्चा pregnant हो जाती है या अगर बच्चे को HIV हो जाता है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर बच्चे के ऊपर बहुत जोर से प्रभाव होता है, all of these are aggravating factors. So section 5 of the POCSO Act, there are I think about 20 subsections in section 5 which categorize different reasons why a penetrative sexual assault would be considered as aggravated penetrative sexual assault. The reason for having another section under aggravated penetrative sexual assault is there is graded and increased punishment under aggravated penetrative sexual assault. The next touch-based offense would be sexual assault, which is without penetration, but there is touching of the body of a child. So touching of the body, in the last few years, बहुत सारे high courts ने ये decide किया है कि it does not have to be touching only of the sexual organs or the genitals of a child. It can be any inappropriate touch, but with sexual intent. So sexual intent to be established is very key in sexual assault, and that would be under section 7 and 8. And section 9 and 10 are aggravated sexual assault. So again, depending on the category of the person who has committed the sexual assault, if it is a family member, a police officer, a government servant, any person from the army, navy, armed forces, any person in charge of a childcare institution, any person from a medical facility,
any person working in a organization that provides services to children, बहुत सारा categories दिए गए हैं, and a relative of the child, and the term relative has been described under POCSO Act as not being related only through blood. It can be relation through marriage, adoption, foster care, shared household, etc. So aggravated sexual assault and aggravated penetrative sexual assault have defined relationships in great detail. I suggest the people who are listening to the webinar to please go and check what categories classifies as aggravated offences. Sexual intent, very important to establish. There is one challenge in sexual assault, इसमें बहुत कम medical evidence मिलता है, तो पुलिस को ये cases में investigate करना मुश्किल है, but बच्चे के consistent statement, अगर पुलिस के statement record करने से लेके magistrate के सामने जो statement record होता है, उसके बाद जो बच्चे का बयान होता है कोर्ट के टाइम पे, उस टाइम पे अगर the child has been consistently saying the same thing, the statement of a child is sufficient to find a person guilty of offences under POCSO Act. Several sessions courts and the superior courts, the high courts, have found people guilty based on the consistent statement of a child. All right, moving forward, other touch-based offences are using of a child for pornographic purposes. So agar pornography is not illegal in India, but any form of child pornography is completely illegal in India, and any person found with any inappropriate images of their child, it can even be someone like a parent who has inappropriate images of a child, can be tried under POCSO Act. And then there is of course using a child for pornographic purposes, where a child is made to perform acts under like penetrative sexual assault or sexual assault, and that is videographed and then publicized. All of that would be considered under using of a child for pornographic purposes. Sections are 13, 14 and 15. The recent amendments to POCSO Act in 2018 and 19 amended that and increased the punishment for using of a child for pornographic purposes. This is a very, very big issue across the country. This is a global issue. Child pornography is a very serious issue that needs to be addressed, and everyone here in this room and webinar can probably contribute in some way. Non-touch based offences would be sexual harassment, जो हिंदी में जो हम छेड़खानी बोलते हैं, would be there is no touch involved, but there is inappropriate gesturing, speaking to a child inappropriately, sending inappropriate messages, showing a child pornography, making the child take off their clothes, showing themselves in a naked manner before the child. So there are various categories of sexual harassment which are defined under section 11 of POCSO Act. Punishment section is 12 under POCSO. Other offences under POCSO would be failure to report a case, which I already spoke to you about, which would be under section 19 and 21 of POCSO Act. Failure to record. This is again a serious offence under POCSO. Any police officer who refuses to accept a complaint, कभी-कभी ऐसा होता है police officers बताएंगे कि नहीं जी ये family का matter है, घर के अंदर है, ये हम case report नहीं करेंगे. A case can be registered against a police officer for failure to record under section 20, and the punishment is under section 21. POCSO also provides for false complaint, which we spoke about very briefly. Punishment is under section 22 of POCSO Act. Disclosure of the identity of a child is a punishable offence under POCSO Act. Next, please. Just a brief overview of the punishments under POCSO Act. As you can see, penetrative sexual assault has a minimum punishment of 10 years, right up to life imprisonment for the remainder of the person's life. Aggravated penetrative sexual assault, minimum punishment is 20 years, going up to life imprisonment, or in certain categories it can even lead to death penalty. Punishment for sexual assault is 3 to 5 years. Punishment for aggravated sexual assault is 5 years to 7 years. Sexual harassment punishment is 3 years. All of the others are fairly simple and straightforward. So moving on to the roles and responsibilities of people under POCSO Act, इसमें stakeholders, key stakeholders जो हैं वो हैं most important of course is the child and the family. अगर कोई बच्चा सामने नहीं आता है रिपोर्ट करने के लिए तो कोई केस नहीं होगा. So the most important stakeholder in a
POXO case would be the child and family, followed by the police. The police are responsible for recording of the information, registering a case and then investigating it. Along with that, we have the NGOs, the Child Welfare Committee. In terms of investigation, we have the Special Juvenile Police Unit and we have the magistrate who records the statement under Section 164 of the Code of Criminal Procedure. Under care and protection, we have the SJPU and the police are again vested with some interest. And then we have the Child Welfare Committee, we have the District Child Protection Unit, we have the special court with certain responsibilities related to care and protection, and then of course we have medical practitioners responsible for care and protection. In the trial stage, we have the special court, which would be a sessions court, we have the special public prosecutor, and we have a support person. In terms of implementing and monitoring of the POXO Act, the state government and more importantly, the National Commission for the Protection of Child Rights and the State Commission for the Protection of Child Rights are vested with the responsibility of implementing and monitoring. Now, in terms of what does the child and family need for reporting a case or after reporting a case? First of all, for a child and family to come forward and report a case is very, very challenging. There's a lot of pressure on the child and the immediate family to not report a case because जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये जान पहचान लोग से ही होता है. तो जब जान पहचान लोग से होता है देन फैमिली और बच्चा ये रिपोर्ट करने में ही बहुत रिलक्टेंट होते हैं. अगर बाय चांस वो आके रिपोर्ट करते हैं, उनको क्या क्या चाहिए रिपोर्ट करने के बाद, वो होता है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर केस, entitlements which is provided under the law. So there is a Form A in the POXO Rules 2020 which has clearly defined what are the entitlements of a child. And then receiving the medical reports are also an entitlement of the child. Timely financial relief and compensation as provided under the law. Speedy disposal of case, need for the child to be met in terms of the interpreter, special educator. Next please. What are the support services available? It's a very short time, but I'll just go through this really quickly. What are support services? Police have the responsibility of conducting child-friendly investigation, and that would mean that the officer is not in uniform. More importantly, the child does not need to go to a police station. The police are required to go to where the child is comfortable. A person that the child trusts and has some confidence in is required to be present with the child at all times. The police are required to submit a copy of the charge of the first information report and the preliminary assessment under Form B to the Child Welfare Committee so that any provisions for the child safety can be taken, and most importantly, timely information to the child and family. From the Child Welfare Committee or the CWC, the support services available are care and protection, shelter, reintegration with the family. So institutionalization is an option that's available. That should be the last option. So if a child is placed in an institution, reintegration with the family is a responsibility of the CWC. Immediate financial aid. बच्चों के लिए, families के लिए ये बहुत ज़रूरत होता है कि इमीडिएट फाइनेंशियल, कभी कभी ऐसा होता है उनको पुलिस स्टेशन तक आने के लिए पैसा नहीं होता है, बस चार्ज नहीं होता है, कैब का फेयर नहीं होता है, तो the CWC can immediately award financial aid. Different states have different schemes for financial aid across the country. Medical doctors, in terms of support services, their responsibilities are providing treatment and therapeutic care for the child. Medical investigation with the consent of the child and family. If there are medical practitioners listening to this, the consent of the child and family is absolutely mandatory. Please refer to the medico-legal guidelines issued by the Ministry of Health and Family Welfare. Medical termination of pregnancy is the right of a person who's pregnant. Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Amendment 2021 are relevant in this situation. Please refer to that. Counseling and therapy is also another very important area which is very often badly neglected. In terms of the courts, there are time frames which are prescribed under the POXO Act. A trial is required to be completed within 1 year of the court taking cognizance of the case. A child's testimony is required to be recorded within 30 days so that the child doesn't forget, the child doesn't need to continue the trauma. Child-friendly procedures during trials are in-camera trials, no aggressive questioning by the defense lawyer or by the public prosecutor
a trusted adult to be present with the child at all time, and for the child not to be called repeatedly to the court. Supreme Court has passed a fantastic scheme on witness protection, which unfortunately is not very strong right now in the country, but there is an excellent witness protection scheme which also families and the police can intervene with and seek assistance for the child and family. Victim compensation can be paid, interim compensation can be paid at any time after the registering of a complaint, and final compensation at the time of disposal of the case. At any point, depending on the needs of a child, if it's a child with disabilities, दिव्यांग बच्चा है या बच्चा जो यहाँ का भाषा नहीं बात करता है, इस बच्चे को interpreters, translators, special educators, sign language experts, mental health professionals का सहारा लेने का provision दिया गया है. Protection of the identity of the child through all processes is a mandatory requirement of POCSO Act. Violation of this is also punishment. Please sum. 32 seconds. Identity proof child. Child not to come face to face with the accused at all times. There is a provision for support persons which is provided for under POCSO rules. A support person has a very key role to play in the journey of a child through a POCSO case. And my suggestion would be for any person who's working in the area of child rights to see how you can help a child victim as a support person appointed by the CWC. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. बाल यौन शोषण तथा इसके बच्चे के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, इसको समझने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बर्नाली दास जी को. डॉक्टर बर्नाली दास मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर और साइकोथेरेपिस्ट के पद पर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं. डॉक्टर दास हम सबके साथ में वर्चुअली जुड़ेंगी. डॉक्टर बर्नाली दास. Yeah. Should I operate my slides from here, or how should I do? So slide will be from there. It's a fine. We can see your slide. Yeah, it's open. Yeah. But to the next slide, if I have to say, then next, I will keep on saying, right? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Because I don't have the operations in my hand, that is why. Yeah. So it has been a wonderful opportunity that I have got. Thank you to the previous speaker. You have really touched upon about POCSO quite well. Thank you for the social justice and empowerment for giving such an opportunity, and thank you for chairing the session by Sri Chandra Moyar, Director. And so good evening or good afternoon, everyone. So today's session is today that I'm supposed to take is on understanding about the child sexual abuse and how it needs to be dealt, and its dynamics and effects of the child sexual abuse in the Indian context. So coming to the slides directly, as it has been said, what we understand by the child sexual abuse, it is an interaction between a child and an adult where the child is used for sexual stimulation. Exploration, my language, I guess I have to speak both in Hindi as well as in English. So in certain areas, I will speak in Hindi. Exploration of the sexuality being a minor, that we understand, that has been covered. Involvement of sexual activity that the child cannot comprehend. बहुत बार ऐसा होता है, the child, because he or she might be 5 years, 8 years, the concept of what is going in his body is not known to her, and that is why she is not able to comprehend nor explain the things in the rightful manner. That is why there are a lot of difficulties when we are taking certain assent from the child. Unable to give informed consent, because from children we take assent rather than consent, to which the child is developmentally not prepared, or it is not the rightful age also where the child is able to have quite of speech that the child is able to elaborate. Cannot give consent or violates the law and social taboos of the society. As we know, the fabric of the society is such that many a times, instead of being supportive, it goes towards the other end,
And that is why the children find it very difficult, because there are so much of stigma attached to explanation of their own issues. So when we understand about the self, many a times what we see that the children are unable to do it because we as parents or as guardians are unable to explain many of the things, and we do not discuss about anything related to sex and sexuality. So as per the POXO, it has been, these are the things which is already covered. So I will not go here. Next. So this is a very old study which has been done and which is also explained in the previous. We can go to the next. So there are, before taking the main topic on child sexual abuse, I would like to go about who are the victims step by step. The victim is always a girl. There is a myth that it is only a girl who is being affected. Next. It could be boys, it could be any gender, it could be a third gender also. So it is significant stigma associated with male victims, and almost always it is underreported. That is why. Next. The victims will have physical signs of abuse. It is that हम लोग सोचते हैं कि उनके शरीर में कुछ होने से ही उनको रिपोर्ट किया जाता है या कुछ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, otherwise no. But many a times it is seen, this is the truth, that no, many a time there can be no physical evidence of the abuse. Injuries may heal quickly. Examination may not be conducted on the same day as per the abuse. So that is why many of the things might be covered. Third is that these children will grow up to the sex offenders. This is again a myth. And the truth is that past sexual victimization can result in an increased likelihood of sexually aggressive behavior, but not children never perpetuate against others. So who are the perpetrators? It is thought that it is only the male persons who are perpetrators, whereas that while majority tend to be men, female perpetrators are also seen and do exist, and abuse are both male as well as female children. Next. It is usually a stranger. It is very rarely a stranger rather. No, the people mostly like to abuse, and the ones with the most opportunity, most access, and most trusted might be a person who might be an abuser. If he looks and behaves normally, he or she is unlikely to be an abuser. No, it is an assumption that a person who seems to be upright citizens are unlikely to abuse children. Many offenders know that the importance of a good public image. Next. The circumstances of the abuse could be that it is a cultural and socioeconomic problem as it is thought, but whereas sexual abuse occurs all socioeconomic strata as well as in all the cultures. Abused children always tell. It is seen that children often fail to disclose about their abuse. They might not even know that something is going wrong in their own body as well as mind. Sexual abuse is a rare experience. In fact, child sexual abuse is not rare. As many as 1 in 4 girls and 1 in 6 boys experience some sort of sexual abuse under the age of 18. And child sexual abuse is its own nature very secretive, and because of unawareness and because of also less of education. Next. Child accounts, how do the child feel about it? Children tend to exaggerate and are prone to making false accusation. We always think that children are exaggerating or they might not be able to tell us. Rather, children often minimize. वो लोग हमेशा बहुत ही कम बोलते हैं क्योंकि उन लोगों के बीच में वर्ड स्टॉक ही नहीं रहता है. जब वर्ड स्टॉक नहीं रहता है, then how would they express? So children often minimize and deny such experiences. Next. If they recant, it means that they lied in the first place. So बहुत बार ऐसा होता है कि child will not tell you or tell us in the very first instances. Many a times it happens because they're so overwhelmed by seeing a police personnel or a person from the child protection.
So they might be finding it very difficult to with a stranger, because we all are strangers to them. So they might take time. So that is why they might lie at that moment that nothing has happened, everything is good. But rather, abuse victims who are more vulnerable to familial adult influences are more likely to recant. So in their own families, because the person who might be very close to him, he might recant or he might tell a lie. Therapists or police can easily implant false memories and cause false accusations among the children of any age. No research shows that the children are more likely to fail to the negative, report negative experience that actually did happen to them, than falsely remembers that they did not. So, could I go to the next? So the next part of our presentation is on the dynamics of the child sexual abuse. So first we need to understand that disclosure of the child sexual abuse is in installments. It doesn't happen over only one day, or it may not happen only in one instance. It goes on for quite some time, and the child will need a lot of courage in order to break that whole system and express in front of anybody else when it is supposed to be reporting. So disclosure is not a process, not a one-time event. So they involve the counselor, because the person needs to be well trained to handle such children. So that is why a trained counselor or a mental health professional is required in such kind of aspect, which is nowadays given a lot of importance to. And do not hesitate to seek help. Next slide. So there is a whole process when a child goes through. Before that, there is what I'm supposed to discuss today is the grooming process and the accommodation process. Grooming is something which every child is being groomed before he is abused. There is a procedure which takes place in a very systematic, methodical manner. So वो कैसे होता है वो हम अभी जानेंगे. So child sexual abuse victims goes through the grooming process, and the process is basically manipulating the psyche of the child. चाइल्ड को एक बार में ही नहीं करते हैं, मगर उनको बहुत कोक्स किया जाता है, या they start building a rapport. In fact, there are no physical abuse in the very first go, and only certain psychological traumas are being given, and after that the things become furthermore debilitating, or it is furthermore deteriorating. Grooming is a methodical approach and systematically done to violate the child. Next slide, please. How the child is groomed. These are the 6 steps that we will cover today. So knowing the child and its family, first is that child ko jante hain, janenge, and then they will start developing a rapport, develop a trust with the family, developing the trust with the child, bribing the child, normalizing and inappropriate behaviors are then showed to the child, gain the child's confidence, and then they start abusing the child. Next slide, please. So first step is called as targeting. Targeting that who are the children who are more vulnerable for child sexual abuse. Like suppose children with no supervision, or whom we call it as unaccompanied children, are more vulnerable to such kind of incidences and instances. Single parent home or broken families are more vulnerable. Children in the foster care, adopted children, physically or mentally handicapped children, poverty-ridden children, socially isolated families, parents with mental illness, and parents with alcohol and drug abuse. These are the first, the perpetrator or the abuser will find out that whether these any of these things are there with the children, and they're very easy to target. Next step. Then the next step is to gain trust. Abuser shows lot of interest in the child. Abuser will start developing a rapport, and abuser shows interest in the child, spends lot of time with the child, gather information about the child's background, उनके बारे में rapport establish करते हैं, बहुत time spend करते हैं, learn about the child's need, child को क्या अच्छा लगता है. Suppose the child is in need of certain phones or gadgets or dolls. These are like softer things for a child, and then the child will be given offer of such kind of things. So learn about the child's needs, gains emotional support, and then becomes a friend. Third step is the next slide.
fill a need. So he will try to fill the vacuum. So the child is being well studied. So child को लगता है उनको चाहिए कुछ सामान चाहिए, like child is not given to eat certain chocolates. So now the child, that abuser will start bringing chocolates for the child so that he can have a good trust in him. Or he will try to give his phone so that he can use the he or she can use the suppose iPhone he is demanding to his parents, and now he will be demanding to this person because now he has a rapport established. So abuser provides child's needs such as food, chocolates, gadgets, iPhones, or games, entertainment, and so forth. Abuser provides emotional support. Then he will be in a good trap. The abuser introduces promise, secrecy, and then he will prepare the child to the next step. In this also, he will be saying that we will play a game. We will play a secrecy game between you and me. And these kind of promises are generally fulfilled by the abuser. Next step, please. Next slide. Then the child will be isolated. Child is told to go to not to go to the other children. So generally, sometimes they will go to the school, bring from the school. He will take extra precaution and care. He will be very loving towards the child. Time is spent by fulfilling the child's need. जो कुछ भी चाहिए उसको easily मिल जाता है, child को easily मिल जाता है. जो parents नहीं देते हैं वो child को abuser दे देते हैं. Secrecy and promise is further strengthened. Then he will start praising the child, and child is being used as an object, or he'll be objectified. Next step, next slide. So the abuse begins. Step 5 is that abuse starts. So here the child is lured into a game. In the game, a child is being abused. Child is blamed to being beautiful or wearing a beautiful dress. Then threat is also used. Child is given something in return of food, chocolates, gifts, but remains with the abuser. So he will say that I'm giving you to use my iPhone, I'm giving you to use my YouTube, but this is yours only, but it will stay with me. So the child knows that this gift is mine, but I cannot keep it because of my parents, so he will be keeping it in front with the abuser. Next. So this is the last step, which is called as maintain the control. So child, during the process of abuse, what the person does is that he will take photographs of the children, or he will take certain nude photographs. So threat, coercion, exploitation, violence, sexual abuse continues. Dr. Das, you have 5 more minutes. Dr. Das, you have 5 more minutes to complete your presentation. और कृपया हिंदी का भी इस्तेमाल करें आप. Sure. Yeah. So periodically child sexual abuse it happens. उसके बाद accommodation होता है. ये child accommodates the abuser's demand. Can we go to the next slide? So इसको बोलते हैं accommodation. Accommodation, how the child is in trap, and ये trap में कैसे होता है उसका भी 5 categories. जैसे कि पहले को बोलते हैं secrecy, helplessness, entrapment and accommodation. So बहुत सारे चीज चाइल्ड के ऊपर जानते हैं और वो सिक्रेसी मेंटेन करते हैं. उसके बाद चाइल्ड को हेल्पलेस बना देते हैं. he or she cannot go out instead of this person. Then falls into an entrapment and an accommodation, and delayed and unconvincing and sometimes retraction. So उसको ऐसे भी बोलते हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है. स्टॉकहोम सिंड्रोम मीन्स the child is in such a psyche, ऐसे उसका मनस्तस्व हो जाता है जिसमें the child feels positive feeling about the abuser. और कभी कभी जब पेरेंट्स उनको नहीं बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाते हैं, then the child himself will call herself will call the person. Next slide. So this is actually video. If you have time, then I can show you. Otherwise, it is about Komal, if you know about it. Or we can skip that. Please skip. Yeah. So why? Ma'am, please play that video. Yeah, because it. Please play that video. Yeah.
The whole process that I told you, it is here. इसमें वॉल्यूम भी है क्या? हाँ। आ रहा आने आपकी पुरानी दोस्त बख्शी अंकल और आंटी मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी तो क्या हुआ गोला ही तो है मेरे सारे दस्तखत हैं चलो आगे बड़ा मजा आएगा ये क्या कर रहे हो अंकल ये कैसा गेम है मुझे बहुत गंदा लगा क्यों किया जनरल मिर्जा गंदा लग रहा है सब ठीक तो है ना बेटा हेलो मिसेस कुमार आपसे उनके बारे में बात करनी थी तुम भी उदास क्यों हो किसी ने तुमसे जोर मेरे पास एक प्लेट है मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है बेटा विश्वास करो अच्छा नहीं है सबको पता चल जाएगा हम भी क्या सकते हैं कौन मदद करेगा हमारी उस भैया वहाँ काम करते हैं वो बच्चों की मदद करते हैं 10 9 8 हेलो कोमल जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे चलो देखते हैं आपको सुरक्षित कैसे रखा जाता है बच्चों कैसे हो आप सब तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लग रहा है हाँ दीदी जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते निकल जाता है तो मुझे गुस्सा आता है हाँ सही मेरा मतलब था क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा तुम में से किस किस को ऐसा लगा तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है मैम थैंक यू फॉर यूजिंग दिस वीडियो मैम इसे स्टॉप कर दीजिए और हम इसे अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे और इसका लिंक भी शेयर करेंगे ताकि हमारे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसको देख पाएं और इस सब्जेक्ट को इस विषय पे जो आप जो बात कर रही हैं उसे समझने के लिए बहुत सूटेबल वीडियो है आप अपना प्रेजेंटेशन सम अप कर दीजिए Yeah, sure.
So actually, the whole process, like why her, eyes were darker, all these things I was about to tell. But however, because of constraints of time, just I will be touching on the disclosure by children, why they don't like to disclose in front of many people. फर्स्ट एक तो है शर्म. उन सभी लोगों को ही शर्म लगता है, मीन्स वेन एवर वी हैव इश्यूज एंड छोटे छोटे चीज में ही हम लोगों को बहुत ही शर्म लगता है. तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्राइवेसी. हम लोग पर्सनल प्राइवेसी के बारे में भी जानना चाहिए. वह पर्सनल होता है जो कुछ हम लोग बता सकते हैं. प्राइवेसी होता है एनीथिंग टू डू विथ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी इश्यूज आर मोस्टली प्राइवेट थिंग्स. सो ये सब जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो फिर द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू आर्टिकुलेट सच थिंग्स. उसको कैसे बताया जाता है, बताना चाहिए, वो सब नहीं होता है. सो थ्रेट्स ऑफ द बॉडीली हार्म, मोरओवर द अब्यूजर विल कीप ऑन टेलिंग हम तुमको हम यूज करेंगे, या your brother will be killed because of this, your mother will be harmed because of that. So ये सब हमेशा ब्लैकमेलिंग चलता रहता है बच्चे का. So that kind of psyche the child needs to be brought out from. उसके लिए बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे कि in mental इलनेस में हम लोग काफी ऐसे बच्चे देखते हैं जिसको PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन. उन लोगों में के स्वप्न में ही बार बार इससे ऐसा दर्दनाक कहानी चलता रहता है, एंड दे रिपोर्ट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन. एंड उसके लिए दे हैव बेडवेटिंग. There are issues of other things like जो जेनाइटल एरिया में उन लोगों का ग्रॉइन्स एरिया में बहुत सारे पेन लेकर के आते हैं. देयर ट्रॉमेटोजेनिक, ये जो ट्रॉमाजेनिक इश्यूज होता है, दिस इज अगेन नॉट दैट वन टाइम. बार बार वो लोग बॉडी को साफ करते रहते हैं, बिकॉज दैट इफ यू हैव सीन इन दैट क्लास that there was a caricatural display of a person who was like, her whole body has been broken down. So उससे ही वो लोग जीवित रहते हैं. And many a times these offenders only, this children who are victim become re-victimized, because when they live in a society, जब वो समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है. रादर जो परपिट्रेटर होता है वो 3 महीने जेल खाने के बाद फिर से आ जाते हैं. So these are pertinent issues like which needs to be addressed, and the children and the family, they go into some other, relocate to some other places, where these are the, these are in fact psychosocial issues which needs to be addressed. So हम लोग जब काम करते हैं, then we not only work with the as a mental health professional, rather we work from a cross-disciplinary or interdisciplinary team approach, जिसमें protection officer from lawyers, then social activists, NGOs, all the legal advisors. We need the whole forum to work hand in hand. Then only we will reach to some amount of, some amount of a point where we want to reach to. So these, with this only, I think I need to, summarize, because there were quite a number of slides. If you get time, then please go through, because I gave a lot of case minutes also. Sure, ma'am. Yeah. Thank you so much, Dr. Barnali Das. अब मैं जेनिम्स से डॉक्टर नेल्सन को उनको प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ. डॉक्टर नेल्सन जेनिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं. डॉक्टर नेल्सन हम सबके बीच में बात करेंगे कि यौन शोषण विषय से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट, उनका सेंसिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है. इस विषय पर डॉक्टर नेल्सन अपना प्रेजेंटेशन करें. Thank you, sir. Namaste. I would like to thank the Access to Justice and Department of Justice for inviting us and making us participate in this webinar. मेरा टॉपिक है नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स. जब भी हम पोक्सो के बारे में या चाइल्ड चिल्ड्रन में वायलेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं. स्टेक होल्डर्स हम सोचते हैं पुलिस या जस्टिस का डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसे बात नहीं है. स्टेक होल्डर्स में हम सब हैं जो सोसाइटी में हैं. ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ. और हर स्टेप पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज,
हर स्टेप पे जो प्रिवेंशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, रिपोर्टिंग हो, रेफरल, इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट या फॉलोअप या जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट हो, हर स्टेप में हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शामिल होते हैं, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है और सेंसिटाइजेशन करना है. So prevention of child sexual abuse in India is, like Madam Khushi has said, given the large child population in India, especially among the underprivileged rural and urban communities, and socio-economic constraints and lack of well-developed child protection system in our country, it is of utmost importance to take all possible measures towards prevention of child sexual abuse. This is from a journal. Sorry. So prevention is always better than cure. So it is often neglected. Prevention reduces the resources directed to violence against children. The UN General Comment 13 notes that prevention measures should be directed at all stakeholders, children, families, and communities, professionals, and institutions in both government and civil societies. Next slide, please. So like I said before, it is a collective responsibility of parents, physicians, allied multidisciplinary professionals, and other institutions to deliver and reinforce children's right to personal space and privacy. Here I would like to emphasize that children armed with information about personal safety are 6 to 7 times more likely to develop protective behavior. There are certain factors, risk factors, which result in child sexual abuse, like marital discord, domestic violence, poor parenting skills, young parents, substance abuse, mental or physical disorder, and history of childhood trauma. We also have community factors like poverty, which is widespread in India, gender and social inequality, inadequate referral facilities, discrimination against particular community, caste or gender, transient neighborhoods, easy availability of drugs and alcohol, and poor police and legal effectiveness. Next slide, please. We also have social factors like cultural and social and cultural norms, especially in the Northeast. We deal with some of the child sexual abuse cases by customary laws. If you are aware or not aware that certain communities have their customary laws and they don't go to the legal process in dealing with such situations. So the need for sensitization and capacity building is much more required in the Northeast. And our societal norms of glorifying violence against each other also contributes to a factor. And we also demand rigid gender roles for males and females in our society. This is also another factor. And we also diminish the status of the child in parent-child relationships. We always tell our children that the elders know better. Even though in children who has passed class 12, we decide their careers. Even for marriage, we decide their career, marriage spouses. So we always diminish the status of the child in parent-child relationships. Then we have health problems, like our infrastructures in health is also lacking. Then education leading to poor living standards or instability is also another major factor. That's why, like I said before, we need to build more capacity and sensitize more people about child sexual abuse. And there is, even though it is banned, there's existence of child pornography, child prostitution, and child labor, and even to some extent, even child marriages also contribute to child sexual abuse. So, next slide, please. So what we need to do is we should हम लोग एक लक्ष्मण रेखा बनाना है चाइल्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? जुडिशरी, पुलिस, फैमिली, सोसाइटी और मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा. उसको वो सब मिलके हम लोग एक लक्ष्मण रेखा बनाना है चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए. खाली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नहीं, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन से भी प्रोटेक्ट करने के लिए. So there is system failure in many systems. Social issues, lack of awareness, इसलिए हम लोग sensitization and awareness के लिए वो चाहिए. Lack of awareness and knowledge of effects of sexual abuse,
एक्सेसिव एक्सपोजर टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, आजकल वीडियो में मोबाइल में सब मिल सकते हैं क्योंकि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इमेजेस जो भी है वीडियो। इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, जैसे हम बहुत पेरेंट्स वर्किंग हैं तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं अंकल आंटी जो भी है उसके साथ। इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, डेफिशिएंट स्कूल सिस्टम्स, विक्टिम ब्लेमिंग, ये भी बहुत चलते हैं इंडिया में। क्यों आप उनके पास गए थे, इस टाइम पे उस टाइम पे क्यों गए थे? विक्टिम ब्लेमिंग एंड स्टिग्मेटाइजेशन। और सिस्टमिक इश्यूज लाइक कंफ्यूजिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, हम लोग सब कंफ्यूज है कि हमारे पास जो नॉलेज है कि चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज किया है, लेकिन हम कहाँ जाएं, कौन रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे रिपोर्ट करूं, ये कंफ्यूजिंग है। देन मल्टीपल इंटरव्यूज एंड एग्जामिनेशंस, जो पहले सिस्टम था पॉक्सो में तो थोड़ा वो बदलाव आ गया। पहले सिस्टम था जो बच्चे को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, सबके सामने हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन होते थे, मल्टीपल इंटरव्यूज एंड एग्जामिनेशंस। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड ऑल्सो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्लान्स। मतलब जो इंस्टेंटली जो मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके हम लोग को छोड़ जाते हैं, रिहेबिलिटेशन के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देन वी ऑल्सो हैव मेडिको लीगल इशूज, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज इसमें लेकिंग है, लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर मेडिकल स्टाफ, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग्स। चेन ऑफ कस्टडी के बारे में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस के बारे में। चेन ऑफ कस्टडी आर यूजुअली नॉट फ्लोट। देन ज़्यादा टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट देने में डॉक्टर्स लोग डरते हैं, इसीलिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने में वो डिलेड होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, इनकरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में। बाद में ट्रायल के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? We have to find solutions. Sorry, my spelling is wrong. I was in a hurry. So we have to identify stakeholders. जैसे हम पहले बताए थे, सोसाइटी, हम कम्युनिटी, पेरेंट्स, स्कूल्स, पुलिस, चाइल्ड लाइन, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, सबको सेंसिटाइज करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना है और ट्रेन करना है, ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू मीडिया, एप्स एक्सेट्रा। अभी आपने पिक्चर एक देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, डिटेल में दिखाया चाइल्ड अब्यूज के बारे में। जैसे so we have to find solutions, we have to identify our mistakes or loopholes, lacuna, and we have to find solutions. So systems available, अभी तक जो systems available है, चाइल्ड लाइन है, लोकल पुलिस स्टेशन, स्टेट जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, काउंसलर्स, डिसिप्लिनरी टीम, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, एनजीओज, हॉस्पिटल्स। और जैसे हम लोग को ये प्रोजेक्ट क्यों दिया गया है कि we have comprehensive care plans, like we can offer psychiatric, psychological and social support to the victims and their families. So these are the systems available now. So to summarize, child abuse or child sexual abuse is widespread in India, although it is underreported. So to increase the reporting, to sensitize more people about how to recognize, how to report, how to go about the whole child sexual abuse scenario. We need to sensitize and build capacity for the above-mentioned stakeholders. Thank you. Thank you, Dr. Nelson. Now I request मैं मैडम शांतिवाला जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। डीओजे के सहयोग से जेनिम्स के द्वारा मणिपुर राज्य में चलाए जा रहे स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अनुभव कैसे रहे, ये कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा को समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर शांतिबाला देवी जी को। डॉक्टर शांतिबाला जेनिम्स के साथ में 20 से ज़्यादा सालों से कार्यरत हैं। डॉक्टर शांतिबाला, My namaskar to Neeraj Kumar, Joint Secretary, Chandra Mohia, Director, I have met him, and of course is Narendra Kumar, Under Secretary, Department of Justice, and all the staffs present here
and all the stakeholders present here. Thank you once again. This is ये हमारे जेनिम्स इन कोलैबोरेशन विद डीओजे ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2 साल से. सपोज टू टेक 37 ट्रेनिंग्स है, इसमें 36 ट्रेनिंग हो गया. दिस इज द लास्ट नेशनल वेबिनार करना था कि हम कि कितना इफेक्टिव है या कैसे मणिपुर में जो हमने किया 16 डिस्ट्रिक्ट्स में, इसके बारे में बताने के लिए, ये प्रेजेंट करने के लिए है. आपको सब जानकारी होगा शायद थोड़ा. मैडम सेंसर ने प्रेजेंट किया. ये बहुत सारा पब्लिक हेल्थ सोशल इश्यूज है, कंसर्न है. 50% ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअली अब्यूज होता है. तो हम कैसे करके कहाँ लूप होल, कहाँ किसको एम्पावर करके, इनको ज्ञान देके, पावर देके चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, चाइल्ड को रिहैब करना है और जस्टिस देना है. तो हमको सब अवेयर होने से ये काम हम कम्युनिटी लेवल में जाकर हम कर सकते हैं, जस्ट टू एम्पावर एवरीवन, ये चिल्ड्रन को भी और एडल्ट को भी. तो फेलियर सब सर ने, डॉक्टर नेल्सन ने बताया था क्या कहाँ फेल हो गया. उसमें सोशल सिस्टम में सिस्टेमिक फेलियर होता है, मेडिको लीगल में इसको. तो कैसे सॉल्यूशन निकालूं, कैसे इसका सॉल्यूशन लाओ, थोड़ा सा एटलीस्ट सम पर्सन को, बच्चों को कैसे हेल्प करूं, फैमिली को कैसे हेल्प करूं या सोसाइटी को इम्प्रूव करूं, मेंटालिटी को चेंज करने के लिए ये प्रोजेक्ट 2 साल के लिए किया है. सो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया है. एक्चुअली टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज 28, but then now it is 31 lakhs. Area of 22,327 square kilometers. Hills का area, मणिपुर is a हिल स्टेट है. इसमें 90% हिल एरिया में है, वैली जस्ट 10% है. But 57.2% lives in the valley area and the remaining 42% in the hill district. So this is everyone here, I hope you have you know Manipur, where Manipur is located. Northeast ka one of the 8 sisters of the northeastern states, but Filhal I think for the wrong reasons Manipur is hurt. So this is, I just wanted to show where it is, the location, your mental mapping के लिए. तो एजेंसी का we will not go into that, सब सारा पता है. Development of the project also, we started in 2018, completed in December 2018. That was the pilot project and we did quite well and it came out with a good result. So we did a master trainer by and for 22 of them. So that was it. And the next is the training and sensitization. क्यों ऐसे ये किया, वो तो बहुत प्रेवलेंट है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, सोशल का प्रॉब्लम है. वी नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन को, प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो इसलिए द लीगल गोल तो मैं बताऊंगी, द लीगल टू लीगली एम्पावर द वल्नरेबल चाइल्ड. कौन कौन किस बच्चों को बहुत वल्नरेबल है, इसका बहुत सारा फैक्टर्स दिए थे. with rights based approach to be responsive to injustice and also to strengthen the capacity of stakeholders. हम सारा स्टेक है, ऑब्जेक्टिव्स हम स्टेक होल्डर्स को ये इक्विप स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, स्टाफ ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड मीडिया पर्सन with critical knowledge and skills to fulfill their roles under the POCSO Act. Understand ये apply ज्ञान. After getting this knowledge, the skills to prevent sexual abuse, इनको वो जो लक्ष्मण रेखा के अंदर वो जो है ना, उसको एम्पावर करने के लिए है. To conduct awareness session also. Now target area are 16 districts of Manipur. Manipur comprises of 16 districts. Who are the stakeholders? बता दिया, पुलिस पर्सन, मीडिया पर्सन, सपोर्ट पर्सन, मेडिकल प्रोफेशन and every one of us, every person in the society are stakeholders. The target was 2,000 to 2,500 personnel to be trained, but we have gone beyond that. In fact, we have gone more than 3,000 personnel have been targeted and trained, given this training.
कैपेसिटी कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वो CSA चाइल्ड से क्या होता है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे किया है, किस किस का रोल है, यही है. तो वी एवरीथिंग हैज बीन स्पोकन पॉक्सो के बारे में. तो पर्सनल सेफ्टी के बारे में ऑल्सो वी नीड टू टेल द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स, द टीचर्स. So, myths and facts about child sexual abuse, POXO Act overview, roles and responsibilities of police under POXO, and then roles and responsibilities of medical personnel, counselors under POXO, and roles and responsibilities of support person, and media house and POXO Act, etc. has been discussed. And we have a handbook where everything is there in a very compact and user-friendly kind of thing. Will not go into the methodology just like that. We have participated in the resource materials, providing all these things are being done. So I'll just to the next slide. There are lots of role play, quiz, case study, audio visual clips, painting and poetry competition, etc. to make it more interesting and then participative also. So total number we have done online training was 15, we have completed 14, so this is the 15th Orga. This will be the other words, we have all completed the training. Total trainings completed 36 as of today, and now will be now it will be 37 training. So stakeholders are college teachers, college students, school students and teachers, police, medical professional, media, CSO. So complete 3,340 people have been trained, have been sensitized, have been provided all the knowledge what one needs to know regarding POXO, about the child sexual abuse के बारे में सब डिटेल में हमारी लोकल डायलेक्ट में ट्रेनिंग लिया है. We don't use English or other English, but their local dialect so that they understand. Besides that, we have produced IEC material translated into 33 languages. We have 33 tribal languages. So we have done that also and disseminated in the community so that they will understand. So this is what progress. In fact, 4 modules on POXO Act created and utilized on every training. 2018 ka pilot project we developed a training manual for every stakeholders. So this is what counseling also provided, individual and family counseling. I got some clips of which we have done in the relief camp, internally displaced people in Manipur, what's happening now. Now, I just want to say, ये क्या मतलब ट्रेनिंग दिया तो कुछ तो मतलब some result तो मिलना चाहिए ना, either negative or positive. तो क्या मिला? I will share it with you. 3,340 people को ट्रेनिंग दिया उसके बारे में. We did a sampling and then analysis, stratified sampling method, and all these things. I will not go into all the details of the technical things. So these are the blue and the red, how much of this thing. It represents how much of the people's response here. कुछ मतलब positive result मिला है कि नहीं, यही है. This is just a graph. So positive effect, we can see the red thing, the pie chart. So the pie chart indicates the percentage of comparison. So we all the different questions in the questionnaire pre-test, same questionnaire is applied post-test, and then we compare it, how much they have learned, how effective is our delivering that training. We actually take it, the actual personal feedback, not the questionnaire, but the feedback after attending the training. So what they said actually, very informative, taught many new things about नया information दिया है पर्सनल सेफ्टी के बारे में. पहले तो
I think we didn't teach the children क्या करना है, how to protect it, personal safety के बारे में we didn't know, we are not aware. I mean, we may be aware, but we didn't apply. But now we are more alert. That is what very useful for all of us as we are in the period of puberty. Those are school children. The training has enlightened us to educate our relatives and children about crimes against minors. That is forthcoming. It's a private and sensitive topic here. Talking about sex, about gender, all these things. Now they are coming out. So because we have sensitized them, there's nothing to be shameful about. We should know your body parts, and the more you try to hide it, the more secretive, then things will not come out. So the more it goes underground, things doesn't come out other than problem. So more of this training must be organized. That is what their suggestion or demand, I should say. It was very interactive session with a lot of discussion and clarifying doubt. They asked lots of questions. We answered them. All teachers must be trained and sensitized for children's safety. Children said that our teachers should be sensitized. And such training has been an eye-opener for me. I become stronger. I can even sensitize my parents. That's what they said. Reporting of child sexual abuse is mandatory and are responsible. That is the thing we keep on hammering. It is mandatory. We should inform. And if you are not informed, you will be punished. That has been, you have a social responsibility, legal responsibility, all responsibilities for to prevent child sexual abuse. So these are exact words they have said. We have recorded it, but we cannot be playing all these things. So these are few of the things, their response. So, so this is again many of the things. It is my first part-time participation in this type of interactive and knowledgeable program about sex. They are talking about child sexual. This is the first time we are feeling very uncomfortable, but now we are feeling better. I have learned a lot about POCSO Act. Informative, educative, communicative, poster-related, translated in our own dialect is a history from my tribe. That's one of the tribes said that no one writes in my tribe language. So this is the first time. IEC poster is user-friendly and helpful in seeking justice for children. All the sessions were interesting and has live application. There was one point very poignant one, said live application. And many school children are 600 children in one school called UNACO. I said they all came out and said that they have gone through this. Inappropriate touch, penetrative, non-penetrative somehow. So I said, it's not late, you can still get justice. All the sessions were interesting in her life. Counseling has empowered me to live healthy and productive life. Today I am taking care of my lovely child despite objection from parents. No doubt it was underage accidental pregnancy. Victim, they become pregnant, and one of them is a very unique one. We had Hingba, liaison officer of this project, will be telling. She is living in a rent house now, getting some compensation. She refused to abort the child, and all the things have been done because she was counseled repeatedly in our department. Major findings, क्या से उधर ये project से निकला. There are significant changes post-training within stakeholders. Comparison showed that training against child sexual abuse intervention program has enhanced knowledge, skills, and attitude positively among different stakeholders in post-intervention compared to pre-intervention. The study signifies the improvement of 1% to 18% post-training resulted from 15 scale assessment tests. This is some technical things. Stakeholders are equipped with knowledge, skills, and right attitude to execute their roles and responsibilities against child sexual abuse. Achievement. We have trained 3,340 stakeholders, trained kiya, provided psychosocial support to victim and family. We go to the victim's house also. But many a time, like lack of, they still under the, everyone is suffering under the myth, and many people do not come out. Stigmatization is one, and so few. We know that things are happening, but what we can reach, we reach. But otherwise, they don't come out openly. Most of them ended up with the forensic department and the gynecological department. So we had been talking to these departments to kindly refer the cases to us.
बिकॉज ये बहुत सीरियस implication होता है, and the long term implication है for the child psychology of the child. It is intergenerational. The child who was a victim will suffer throughout, and then he or she will be married. The relationship problem will be there. The children that they gave birth, they will not be able to, parenting का poor parenting style होगा, skill नहीं होगा, तो step by step, generation to generation it is affected. ये research बहुत सारा research ने भी कहा है. So we did counseling both individual and family, provided free psychotherapy and pharmacological therapy also. Interlinking services for victims, like we are asking the gynecology department and the forensic and other pediatric department. If you have these things, yes, from pediatric department, we have also taken up a case from a village. They want to do it with the customary law. They don't want to think, but we try to convince them, and we spoke to the medical superintendent, and that case also has been taken up. It was referred by the pediatrician. How many minutes? 5 minutes, too much. Created ICU translate 33 local language, prepare user-friendly handbook, Facebook, YouTube, and WhatsApp group are created to reach out to public. Raising awareness among stakeholders about the POCSO Act has given rise to reporting child sexual abuse. It was happening. Reporting at least has increased, and the rights of child victims that have to improve the investigating process. We have the juvenile police station, the women police station also in Manipur. This has been strongly being taken up. I think the government policy needs to be strengthened. We are all a support group here. Increasing trends of reporting POCSO cases in Manipur. In Manipur, 29 POCSO cases were registered in 2017. Obvious convictions were given in only 3 cases. So in 2018, 43 new cases were registered and 26 charge sheets submitted, of which the court convicted perpetrators in 4 cases. In 2019, conviction decrees were passed in 5 cases out of 58 registered and 59 charge sheets submitted. So there is a gradual improvement in the justice delivered also. In 2020, during that time there was a pandemic also, COVID, 75 cases were registered and 53 charge sheets were made, submitted, while conviction was given in 1 case only. 161 POCSO cases were registered from April 2021 to October 2022. Chronicle News Service, November. But however, the registration or reporting is increasing, which is a good sign, one step better than before. So I would like to say the plan for sustainability. It is only one. Yeah. Just one minute. Creation of support system through WhatsApp group, sustainability ka, online services and opening of child psychosocial support. We have child psychiatry OPD. We have daily, of course. Digital talks like talk show, which we Doordarshan in AIR. So we have been doing this messaging, of course. So these are the some points which can sustain this. I see material. This is the one in all the dialects. This is about. Please turn off your mic. किसी का mic on है? Okay. Now, sir, action photographs and media coverage. What we from the start, launching a project. These are the किसी का माइक ऑन है उसे प्लीज ऑफ कर दीजिए. आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम प्लीज सम अप करिएगा. Finish. This is the what I've just captured. This thing, how we started and what even these all these pictures were just being put up. Action photographs and media coverage. These are all the things. If we had put up, it'd be a very too much for 36 training. So these are all the things which we have done. So thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू मैम. अब मैं
पोस्ट टेस्ट का फॉर्म भी है, उसे भी सर्कुलेट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग भर दीजिएगा उसको। इसी के साथ में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री नीरज कुमार ग्यागी जी को उनके विशेष संबोधन कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर के मार्गदर्शन में ही न्याय विभाग इस विधिक जागरूकता वेबिनार का नियमित रूप से आयोजन करता है। सर। थैंक यू आशुतोष। इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इस वेबिनार के वक्ता प्रोफेसर शांतिवाला देवी जी, डॉक्टर बर्नाली दास, डॉक्टर नेल्सन और खुशी जी तो हैज लेफ्ट अर्ली। जैसा कि आपको बताया गया कि ये 20वां वेबिनार है जो हम लोग कर रहे हैं, और जो आज का टॉपिक है वो सेक्सुअल एब्यूज है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। एंड इस टॉपिक को अगर आप गौर से देखेंगे तो टॉपिक चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज नहीं है, टॉपिक है सेंसिटाइजेशन ऑफ ए स्टेक होल्डर अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। दो पहला पहलू हैं जिसको कि देखना चाहिए और समझना चाहिए हम सबको। किसी भी इल प्रैक्टिस को रोकने के लिए आप कितना भी सख्त कानून बना दीजिए, वो काफ़ी नहीं है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के लिए कानून पहले से भी था, डिफाइन नहीं था, लेकिन पॉक्सो जैसी चीज़ बनी और उसको और धीरे धीरे कर करके हम लोग स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये कानून जो है, जब एक बार कोई इवेंट या इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद से किसी कल्प्रिट को कैसे करके हैंग किया जाए, कैसे करके उसको बुक किया जाए, उसका सारा फोकस जो है वो इस बात के ऊपर में कि कैसे कर करके मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। डॉक्टर को या पुलिस को या जो काउंसलर होता है या जो चाइल्ड का हैंडलर होता है, उन सब का इंटेंशन ऐसा ही होता है कि जो परपेट्रेटर है वो किसी तरीके से चाइल्ड को ऐसे करके ट्रेन किया जाए कि उसकी सारी मेडिकल एग्जामिनेशन और ये सारी चीज़ें हों। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अभी किसी एक वक्ता ने ये कहा कि पहले बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी। इसका ये मतलब है कि इस टाइप के इंसिडेंट जब से मानव समाज है, जब से हमारी सोसाइटी है, ये तब से चला आ रहा है। और हम लोग को ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में अगर इनकी संख्या या ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, उसके लिए क्या जिम्मेवार है? हमारा डेवलपमेंट, हमारा सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल फ़ोन। आप बात कर रहे हो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बंद कर दीजिए। जिसके हाथ में इंटरनेट मोबाइल है और इंटरनेट से कनेक्टेड मोबाइल है, वो कहीं पे भी रहे, आप कैसे किसी चीज़ को रोक सकते हैं? आप 50 पोर्नोग्राफिक साइट को आप ब्लॉक कीजिएगा, कल होकर के 50 और खुल जाएंगे। देयर इज नो एंड टू इट। प्रिवेंशन जो है और एक जो हार्ड टाइप का रूल है या लॉ जो है, उसको बनाना इज नॉट एनफ। मेरा इसमें बहुत ही डिफरेंट टेक है। ये हर समाज में है, हर देश में है। भारत देश में इसका जो प्रकरण है, चूँकि जनसंख्या इतना जाता है और इतना ज़्यादा घनत्व है, तो ऐसी संख्याएं और इस टाइप का इंसिडेंट होगा। लेकिन फिर भी एक कल्चरल डिफरेंस के चलते इसके इंसिडेंट कंपेयरिंग टू डेवलप्ड कंट्री कम है। और मेरी समझ से यहीं पे हमारा सोल्यूशन लाई करता है। हम लोग को बचपन से ही अपने बच्चों को इस चीज़ के ऊपर में सेंसिटाइज करना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जैसे हम उनको सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, उसी टाइप से इस टाइप से किसी उसको करना। और चाइल्ड विक्टिम के लिए सबसे बड़ी बात समझने की ज़रूरत ये है कि वो बच्चा है, उसको अबोध है, उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं। उसको एक्सप्लॉइट करना और उसको मैनिपुलेट करना एक परपेट्रेटर के लिए बहुत आसान होता है। और इसमें आपको और हम सबको पता है कि मैक्सिमम परपेट्रेटर जो हैं वो कोई इलिटरेट या कोई उस टाइप का क्लास नहीं है। पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान, मनीषी लोग इसमें लिप्त हैं। ये आपकी मानसिक दुर्विक्षता को शो करता है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के नाते आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, मानसिक दुर्विक्षता, और इसका कोई इलाज नहीं। ये बहुत धीरे धीरे कर करके, और मुझे बड़ी खुशी है
कि जेनिम्स ने मणिपुर, जो कि एक छोटा सा राज्य है, एक प्रयोग किया है और अपने इन प्रयासों से बहुत अच्छे स्टेक होल्डर तक पहुंच पाए हैं। उनका प्रयास सराहनीय है। अभी तक उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट में किया है। मणिपुर का पॉपुलेशन और मणिपुर का जो टेरेन है उससे हम लोग अवगत हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस शुरू से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में तवज्जो देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो ये जो प्रयोग है, हमारा यही प्रयास है कि इस चीज़ के बारे में लीगल अवेयरनेस के माध्यम से सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज नहीं, बाकी सारे मुद्दे पे भी हम इसका प्रचार प्रसार एजेंसी के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से करते आए हैं और करते रहेंगे। आप सबने एक समय निकाला और इस वेबिनार में अपना सहयोग दिया, अपने विचार रखे। आप सबका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, सचिव न्याय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग हमें ऐसे ही निरंतर मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत